वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसका पहला जो क्वेश्चन था उसके फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है, जो कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आज बात करेंगे रूल्स फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रॉड तरीके से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना है जनरल रूल, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज ट्रीटेड एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस शैल बी द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट फुल स्टॉप इन द केस वेयर द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, कॉमा द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। उसके बाद देखिए द डिफॉल्ट मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज इज, सबसे पहले नंबर 1, द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट शैल एक्ट एज द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द सप्लायर प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST फुल स्टॉप। नंबर 2 देखिए द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड शैल एक्ट एज द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर विदाउट GST रजिस्ट्रेशन। इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट डिटरमाइनेबल देन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद देखिए सेपरेट प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड in the GST Act for determining the place of supply for various types of services like artifact services, restaurants, transportation services and more. The above methodology is applicable only for supply of services for which provisions have not been provided for in the GST Act. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इनके PDF चाहिए जो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे PDF नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एट वेरी रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। डिस्कस इन डिटेल्स द GST वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है। तो आंसर लिखिए एज पर द वैल्यूएशन रूल्स अंडर GST, कॉमा द टैक्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एड वॉल्यूम बेसिस फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, कॉमा द टैक्स पेयर कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द assessed value of goods or and services supplied. However, these three things shall be taken into consideration at the time of valuation of tax under GST. सबसे पहला देखिए है ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर GST, कॉमा द टैक्सेबल वैल्यू इज कंसिडर्ड एज टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, कॉमा द वैल्यू दैट हैज बीन पेड और हैज टू बी पेड बाय द बायर टू द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर GST फुल स्टॉप। इट shall be noted the supplier and buyer shall not be related persons and the price is the only consideration full stop. However, comma for some special cases the transaction value has been determined in CGST rules 2017. Number 2 देखिए compulsory inclusions. Here are some major things that shall form a part at the time of valuation. Number 1, any taxes, fees or charge levied under any other law apart from GST. Number 2, expenses incurred by the buyer on behalf of the supplier. Number 3, interest, late fees or penalty. Number 4, any direct subsidies or subsidies provided by the government. Number 5, any other incidental expenses such as commissioning or packaging and handling costs incurred by the supplier. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नंबर 3 और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तब तक किसी वीडियो से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँ।